Hello students, welcome to my economic class. Today we will study 2022 previous year questions. आम आज 2022 रो CPET PG Entrance रो आम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा 2022 रो आम ऑलरेडी कंप्लीट कर देजंती 2021 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर देजंती जो मान न देखिचो क्लास को देखि दबो. First question, if the market supply curve for a product shifts rightwards, what is the best possible explanations for this shift? যেତେବେଳେ market supply curve rightward shift କରୁଛି ସେତେବେଳେ actually କ'ଣ ପାଇଁ shift କରିଥାଏ ସେଇଟା ଦେଖିବା. First option, increase in the price of the raw materials. Second option, introduction of a tax on that product by the government. Option third, introduction of a new technique that makes the production of that commodity cheaper. Option 4, an advertising campaign that is successful in promoting the product. First option कौन कौन increase in the price of raw material. The price of raw material, the raw material price increase कर जीवो सेतबेले कौन हो आम cost of production increase हो जीवो जदर हम supply downward shift करिवो माने left को supply कर left को shift करिवो not right को shift करिवो. एट ऑप्शन ए तो incorrect. Next option, introduction of a tax on that product by the government. The government tax introduce करिवो ताले कौन हो आमर प्राइस इनक्रीज करिवो जहाँद्वारा कौन आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करिवो सप्लाई शिफ्ट करिवो लेफ्ट को. ऑप्शन 4 कौन देछि इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्निक दैट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी चीपर. न्यू टेक्निक आसीबो इंट्रोड्यूस हो आम प्रोडक्शन कौन हो चीपर हो जहाँ आम कौन सेम प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई सेल करवा जहाँद्वारा कि आम कौन हम सप्लाई कर राइट को शिफ्ट कर. न्यू टेक्निक आसवा द्वारा प्रोडक्शन चीपर हम आम कौन हम आउ क्वांटिटी सप्लाई इनक्रीज कर सेम प्राइस रे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जी कंज्यूमर सरप्लस इन द एरिया. कंज्यूमर सरप्लस इन द एरिया व्हाट कंज्यूमर सरप्लस केते होइथबो. व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड एक्चुअल टू पे. कंज्यूमर एक्चुअली केते विलिंग करे इच्छा करछे परचेज करबा पई गुड्स को केते पेमेंट करबा पई चाहूचे एक्चुअली से केते पेमेंट करछे तांको डिफरेंस को हमें कंज्यूमर सरप्लस करबा. कि कंज्यूमर सरप्लस को एरिया हम फिगर केमते कैलकुलेट करबा. कंज्यूमर सरप्लस फिगर बाहर करबा एडाला डिमांड एडाला सप्लाई जो टॉस कला हम इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो डिमांड र बिलो रे प्राइस र एबव रे जो एरिया एडाला कंज्यूमर सरप्लस कोन कहबो बिलो द डिमांड कर एबव द प्राइस कर. अब प्रोड्यूसर सरप्लस आसीबो प्राइस र नीचे बिलो द प्राइस एंड एबव द डिमांड कर. प्रोड्यूसर सरप्लस आसीबो कोन सप्लाई कर एबव ए एरिया आसीबो प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व एबव द एरिया एंड प्राइस कर्व प्राइस रो बिलो द प्राइस एंड एबव द सप्लाई कर्व प्रोड्यूसर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस कौन हो बिलो द डिमांड कर्व एंड एबव द प्राइस. एट ऑप्शन ए द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हाट डज द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन. ये जो मार्जिनल इकोनॉमिक्स रे मार्जिनल कहले कौन बुझाटा होची 2021 प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये हमें करथिले. मार्जिनल मीन्स कौन एडिशनल चेंजेस एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा यूनिट्स तेणु आर आंसर कौन हम ए एडिशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हेन ए कंज्यूमर सीक टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव by demanding less of a commodity as more people consume it, this phenomenon is known as what. when consumers seek to be different and exclusive by demanding माने गोटे कंज्यूमर कौन करिवो डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव डिमांड करिवो. एक्सक्लूसिव मीन्स आउ के तार कौन करथिबे डिमांड करनथिबे डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव डिमांड करिवे जे कि सेही कमोडिटी डिमांड कौन होथो अदर्स माने कौन करथिबे लेस करथिबे माने सेही जो एक्सक्लूसिव बा डिफरेंट कमोडिटी को लेस कंज्यूमर डिमांड करथिबे आ कौन होथिबे मोर कंज्यूमर अवॉइड करथिबे माने समस्त कौन करबे ताको कंजप्शन करनथिबे बाय करनथिबे. सेही गुड्स को हम कौन करबे स्नॉब इफेक्ट करबे. स्नॉब इफेक्ट कौन करछि स्नॉब इफेक्ट कोछि जे कि डिफरेंट एक्सक्लूसिव गुड्स रो डिमांड करिवे सम फ्यू से बायर्स पर फ्यू कंज्यूमर्स करिवे आ मोर कंज्यूमर्स आर अवॉइडिंग दिस दैट इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट.
बैड ओगेन इफेक्ट कौन कहे बैड ओगेन इफेक्ट कहे मैंने बैड इफेक्ट हूँ कौन इफेक्ट द्वारा कौन हो आमर डिमांड इंक्रीज कर सपोज आम किसी किणुच्च आमको देखिकी आउ कौन करेंगे से किणवे जमी आम इफेक्ट हो कौन जो इफेक्ट जहाँद्वारा कौन हम आमर डिमांड इंक्रीज कर तार हूँ लोक मैंने कंज्यूमर तार मोर एंड मोर डिमांड इंक्रीज कर तो बैड ओगेन इफेक्ट तो ये ऑप्शन हेनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स change in the price of one commodity, change in the quantity demand the other commodity, that is called substitution effect. Suppose tea and coffee, tea रो the price increase करछि हमर quantity demand coffee रो rise करछि जदर that is called substitution effect. Substitution effect होछि change in the price of one commodity, change in the quantity demand of the other commodity, that is called price substitution effect. Price effect means change in the price, चेंज इन द क्वांटिटी में प्राइस चेंज होची से ऑन कमोडिटी रो तार क्वांटिटी केते चेंज होता है जिसको प्राइस इफेक्ट तो आर आंसर होची कोन हमर स्नोब इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट को कॉस्ट आउटपुट चेंज हेले मध्ये चेंज होनी को कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन आउटपुट जो चेंज हेले फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हम ना आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज कले हम फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहा इवन आउटपुट जीरो हेले हम फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट यदि शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या सहित सामान हो मार्जिनल कॉस्ट फर्मूला कौन चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट आमर आउटपुट टोटल आउटपुट के चेंज होगा द्वारा टोटल कॉस्ट के चेंज होची दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट एटा देखिए द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द चेंज इन आउटपुट दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय द चेंज इन आउटपुट आमर शॉर्ट रन बहुत वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट थाए मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंजेस को देखा आम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस देखा तेणु ऑप्शन बी बी करेक्ट द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट दैट इज द करेक्ट। ऑप्शन सी द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट माने कौन दूची मो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स मोर आउटपुट रो केते एडिशन होची बा चेंजेस होची जहाद्वारा मो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन पाई मोर से वेरिएबल कॉस्ट केते चेंजेस हो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द टाइप ऑफ decision a farm has to make is different in the short run than in the long run. Which of the following is an example of a perfectly competitive farm's long run decision? Perfectly competitive market रे कौन था फार्म जो डिसीजन नहीं था कौन डिफरेंट था शॉर्ट रन ठारू के लॉन्ग रन डिफरेंट डिसीजन था तेणु लॉन्ग रन परफेक्ट कंपनी मार्केट रे कौन डिसीजन नहीं था कौन डिसीजन नहीं था whether or not to enter or exist an industry माने लॉन्ग रन ले कौन को फार्म एंट्री एग्जिस्ट करेंगे ता डिसीजन के नहीं था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन लॉन्ग रन ले डिसीजन नहीं थे को फार्म कौन एंट्री वो इंडस्ट्री एंट्री एग्जिस्ट करिवो और परफेक्ट कंपटीशन फार्म कौन प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर एते लॉन्ग रन से कौन डिसीजन नहीं थे whether or not to enter or exist in the industry गोटे फार्म एंट्री और एग्जिस्ट करिवो कि नहीं इंडस्ट्री से डिसाइड करते लॉन्ग रन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन the margin revenue product of labor for a farm what margin revenue product हम समझ पारिबा a margin revenue product equal to marginal revenue into marginal product एतले हमरो फार्म रो the price of the farm's output increases will increase if the price of the farm's output increases एतले मोर प्राइस ऑफ आउटपुट प्राइस इंक्रीज करिवो मोर आउटपुट मध्ये इंक्रीज करिवो हम टोटल रेवेन्यू केमिति बाहर करती टोटल रेवेन्यू कोन प्राइस इनटू क्वांटिटी यदि मैं प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज करछि मो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करिवो मोर मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो कोन इंक्रीज करिवो कही तो आउटपुट इनक्रीज कर जाऊँगी मो प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इनक्रीज कर जाऊँगी कौन मो मार्जिनल प्रोडक्ट इनक्रीज करता इफ द फार्म्स डिमांड कर फॉर लेबर मैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल हम क्या सहित मोर फार्म्स डिमांड कर फॉर लेबर सहित इक्वल हम
सेकेंड कौन देखिए will decrease if the farms hire more labor तो अधिक more and more labor में addition करिबा तर labor margin product कौन करिबा decrease करिबा एतले margin product decrease कर जिवो automatically मोर margin product कौन करिबा decrease करिबा all of the answer is the correct. Next question, which of the statement is true? अब इतना को statement true अछि average total cost equal to average variable cost equal to average fixed cost no it is incorrect कौन होगा average total cost minus average variable cost equal to average fixed cost is the first option incorrect. Second option average total cost plus marginal cost equal to average fixed cost is the incorrect. Next question, next option average total cost plus average variable cost equal to average variable cost average total cost plus average fixed cost equal to average variable cost. Average variable cost is incorrect. Average total cost minus average fixed cost equal to average variable cost. Next option average fixed cost plus average variable cost equal to average total cost. We know that average total cost equal to average fixed cost and average variable cost. Option D is the correct. Individual labor supply curve what? Individual labor supply केमे दे रहे तमरो individual labor supply curve shift करिबो downward if workers preference for leisure increase जदि leisure फ्री टाइम वर्कर मान इंक्रीज कर जाय से मतलब कोन अधिक leisure न होबा पई यदि leisure से मान लेबे leisure टाइम हे कोन वर्किंग डिक्रीज हे जिवो जादर कोन लेबर सप्लाई मध्ये डिक्रीज हे जिवो तेनु ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन moving along an indifference curve the what moving along an indifference curve moving करिवो एतबे कोन हे तो कोन हो जे तो कंज्यूम आमे जति इंडिफरेंस कर्व व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हला गिव इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन हम गुटे कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व जानती डिफरेंट पॉइंट्स हम कोन दे इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन होते तो कंज्यूमर प्रिफर कोन थे कोन हो डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अनदर से सेम इंडिफरेंस कर्व रे गोटे पॉइंट टू अनदर पॉइंट पास में से प्रिफर करन कोन भाई से सेम इंडिफरेंस कर्व कोन सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन पाइ देन कंज्यूमर डू नॉट प्रिफर one conjunction point to another. Option D is the correct. Next question, find the slope of tangent to the curve y equal to 9x square plus 7x4 plus 8x equal to 1. ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋପ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବ ଏତର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବାହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ଲୋପ୍ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଆମର ଆର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ବାହାର କରିବ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ 46. Next question, the optimal amount of population to site is where केतेबेले optimum amount to पाइबा optimum amount केतेबेले पाइबा जेतेबेले हमर marginal social benefit equal to कोन होइथे marginal social cost marginal social benefit equal होइथे marginal social cost जेतेबेले कोन होइथे हमको optimal amount मिलथे एते optimum amount पाइथे कि एते optimum amount population केतेबेले पाइबा सोसाइटी जेतेबेले marginal social benefit population equal हे जोगा तो margin social population सेतेबेले जो कोन हमरो optimal output population of the society पाइछो. If A and B are square matrix of the same order then dash जब हमर A and B are square matrix थे same order रे तबे कोन हबो A B रो ट्रांसपोज equal to B रो ट्रांसपोज into A रो ट्रांसपोज. Option B is the correct. Next question जीवा which of the following is not true अब true or true नहीं matrix addition is commutative matrix addition is associative matrix multiplication is commutative matrix multiplication is associative. Option C that not true matrix multiplication is associative not commutative. Option question 14 if A and B are square matrix of the same order then A B रो transpose equal to A रो transpose into B रो transpose. Option A is the correct. Sorry मैं option B देती option A is the correct. A B रो transpose equal to A रो transpose into B रो transpose. Next question जीवा if A is symmetric matrix then A रो transpose equal to जेतले if A is symmetric matrix हला symmetric matrix हेतबो हेतबे A रो transpose equal to जो का सहित A
सहित नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एट ए प्राइस ऑफ ₹11 क्वांटिटी डिमांड इज 90 and at a price of ₹9 quantity demand is 110 the price elastic demand is dash एटी कौन देखिए हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P1 plus P2 डिवाइड बाय Q1 plus Q2 फॉर्मूला होती चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इनटू P1 plus P2 डिवाइड बाय Q1 plus Q2 एमती बाहर करदेव आम आंसर आसो 1 नेक्स्ट क्वेश्चन necessities have dash elasticity demand of between 0 and 1 माने necessity goods क्षेत्र में को कहार elastic demand 0 ରୁ 1 भीतर थाए आमर एटी इनकम necessity of income elastic demand of between 0 and 1 एदि इनकम क्षेत्र में elasticity बाहर करबा हेटा तो कोन हबो लेस हबो बट 0 ରୁ 1 भीतर होइते कोन बेसी चेंज होइनी कोन चेंज होते कोन 0 ରୁ 1 भीतर होते एटी आंसर कोन हबो इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन India GDP or national income also known as NNP is calculated based on dash what एतले हम नेशनल इनकम बाहर करछन एतले कोन हबो नेट नेशनल प्रोडक्ट सहित कोन बाहर हम नेशनल इनकम सहित इक्वल हबो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कोर्स सहित इक्वल हबो कोन हमर नेशनल इनकम सहित नेक्स्ट क्वेश्चन we are given the following hypothetical inputs in US dollars in a trillion for economic XYZ ट्रिलियन देछि ट्रिलियन द्वारा हमर कोन एक इकोनॉमी रे XYZ नेशनल इनकम बाहर करबो आपको नेशनल इनकम फार्मूला ऊपर पुट करबो पुट पके सला परे जो जीडीपी बाहर करबो तापर जीडीपी एफसी तापर जीएनपी एमपी जीएनपी एफसी तापर एनएनपी एफसी बाहर कर दबो और आंसर केते आसीबो और आंसर मिनिमम 50 आसीबो कैलकुलेट करथिबो जल्दी न बाहरला मते कमेंट रे मेसेज कमेंट करथिबो मु कोन करबे तुमरा आंसर कर देबी नेला क्लास देखिबो कोन सब का रिक्वायरमेंट होछि मते जणैबो को आउ को क्लास आनले तुम पई भलो हेबो बेटर हेबो मते इन्फॉर्म करबो कमेंट करबो तुम फ्रेंड मानो पाखो क्लास शेयर करबो लाइक सब्सक्राइब कर देबो थैंक यू।